हाँ, वेलकम स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 35, चैप्टर न्यू, चैप्टर 7। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने यहाँ रह के घरों में प्रॉपर प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और उम्मीद करते हैं कि वीडियो भी आप पूरा देख रहे होंगे। जैसा कि मालूम है बहुत से लोग वीडियो देखते ही नहीं हैं, तो आई होप कि आप देख रहे होंगे और सॉल्व कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, वी हैव completed chapter number 8. Now in reverse, we are in chapter number 7. Okay, so students, in this chapter we will find distances between 2 points and ratio of a given line segment etc. इसके पहले स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या किया, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री फिनिश किया। आई होप कि आप उसको कंप्लीट कर चुके होंगे। तो इस चैप्टर में क्या है कि नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एंड दिस इज ए पार्ट ऑफ हाफ ईयरली सिलेबस। एंड स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट टू 5, चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 5 अप टू एपी ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 8 आपका हो चुका है, अब चैप्टर नंबर 7 में है, और 7 के बाद एक और चैप्टर बचेगा जो चैप्टर नंबर 6 है, विच इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ हाफ ईयरली सिलेबस। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आप वेरी फेमिलियर हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई पॉइंट्स है, मान लीजिए ए है, इसका कोऑर्डिनेट x1 और y1 है। ओके स्टूडेंट्स, x1 y1, एंड एक पॉइंट आपका b है, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। सॉरी, आप जानते, पहले से जानते ही कि अगर कोई पॉइंट है, अगर x y लिखा है तो दिस इज एब्सिसा, and this is called ordinate. Okay, this is measured in x-axis and the ordinate is measured in y-axis. और आप ये सब वेरी अवेयर हैं, ये होता है कार्टेशियन प्लेन, दिस इज x-axis and this is y-axis. Horizontal line belongs to x-axis, vertical line belongs to y-axis. This is positive side minus negative side, positive and negative. इस कार्टेशियन प्लेन में यदि कोई 2 पॉइंट्स लोकेट कर रहे हैं तो हम उनका डिस्टेंस पता कर सकते हैं कि क्या है दोनों पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस। समटाइम्स वी विल यूज पाइथागोरस थ्योरम टू फाइंड, विच इज आल्सो नोन एज बोधायन थ्योरम, टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। बट जनरली हम ये फार्मूला यूज करेंगे, अगर आपका कहीं भी कोई पॉइंट्स गिवन है, इफ यू हैव एनी पॉइंट्स इन कार्टेशियन प्लेन, देन डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, because we do not take distance negative. For example, AB is a distance, then you can write here x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square. This is the distance formula. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, लाइक AB is equal to under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. There are 2 ways to write distance formula. Why it is so? Because x1 minus x2 whole square and x2 minus x1 whole square, the sign of both the terms will remain same after squaring. तो इसलिए जब भी डिफरेंस होगा, डिफरेंस का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, सो इधर इट मे बी यूज्ड और आइदर दिस फार्मूला मे बी यूज्ड. So students, generally we will use this formula to find distance between 2 given points. So be ready, and with the help of this formula we will find distances between 2 points. Okay students, so be ready. So students, here I would like to tell you how this formula come to exist. Suppose students, we have a Cartesian plane, and in this plane we have 2 points. First one is A and second one is B. The coordinate of first one is, suppose x1 y1 and the second one is x2 y2. So these are the coordinates. Okay students, so we have to find the distance between these two. Okay students, अब आप इसको अगर यहाँ से x एक्सिस के पैरेलल ड्रा करें और यहाँ से y एक्सिस के पैरेलल, सपोज द पॉइंट A x1, तो x1 आपका यहाँ तक रहेगा और दिस इज
y1. Students, okay, this is x1 or this is y1. And for this point, suppose this point is C, so here you can write x2 up to here, x2, and similarly y2 is there. So students, we have 2 points A and B. The location, the coordinate of point A is x1 y1, that is this is x1 and this is y1. Similarly the point, the coordinate of point B x2 y2, that is this is x2 and this is y2. Okay students, and you know in this case there is a right angle triangle. Question is, what is the value of AC? AC की वैल्यू क्या होगी? आप देख रहे हैं AC की वैल्यू क्या होगी? x2 माइनस x1, तो ये आपका हो जाएगा x2 माइनस x1. सिमिलरली BC की वैल्यू क्या होगी? B, इसको अगर आप नाम दे दें यहाँ पे M और N, तो आप देख सकते हैं कि AC इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ON माइनस OM, दैट इज x2 माइनस x1. सिमिलरली BC इज इक्वल टू, BC मीन्स BN माइनस CN, तो BN इज y2 and CN is y1, this is y1. Okay students, so BC is y2 minus y1 and AC is x2 minus 1. Now we have a right angle triangle like ABC, or if this triangle is right angle, then distance is hypotenuse. So to find AB, we should use Pythagoras theorem. So using Pythagoras theorem, AB square is equal to AC square plus BC square, or you can write AB is equal to under root AC square plus BC square. अब आप AC and BC, the values of AC and BC will be put x2 minus x1 whole square plus here y2 minus y1 whole square students, and this is nothing but your distance formula. तो ये क्या है आपका? This is distance formula. अब this can be written as also as this, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज द डेरिवेशन हाउ दिस फार्मूला कम्स. ये फार्मूला कैसे आया? एंड नाउ विद हेल्प ऑफ दिस फार्मूला वी विल सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस. सो बी रेडी टू सॉल्व. तो स्टूडेंट्स, हियर वी हैव टेकन 7.1 क्वेश्चन फर्स्ट. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स. फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेते हैं भी हम सेकंड क्वेश्चन. सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट सेकंड. वी हैव -5 and 7 and -1 3 टेकिंग x1 y1 x2 y2. तो डिस्टेंस फार्मूला अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 minus y2 whole square. Okay students, you can use x2 minus x1 also and y2 minus y1 also, but here take any one format of formula and use it. कोई भी एक फार्मूला लेके आप इसको यूज कर सकते हैं. नाउ पुटिंग x1 minus x2, x1 is here -5 minus x2 is here -1, use double bracket plus now y1 7 minus sorry y2 is 3 whole square. Now you can write -5 plus 1 whole square plus 7 minus 3 4 square minus 4 whole square plus 4 whole square. 16 plus 16, that is root 32, and this can be written as
4 root 2 unit square, sorry, unit. Okay, student. So this is the answer, 4 root 2 units. So by this way you can find distances between different given pairs of points. Okay, students. So now we will take third. Write down this. Now we take a third part whose coordinates are AB and minus A minus B. Okay, तो देखिए here third solution, C distance that is D is equal to under root x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square. Okay, students. Now you know x1 is A, y1 is B, x2 minus A and y2 is minus B. So put these values, x1 minus x2, A minus x1 minus x2 minus A plus y1 is B minus y2 is already minus B using square. Okay, students. Now A plus A whole square plus here it can be B plus B whole square. So this can be written as 2A whole square and here 2B whole square. Okay, students. Now rub a bit. See, this can be written as 4A square plus 4B square. Take 4 as a common. So A square plus B square under bracket whole. Now take square root of 4, so it becomes 2 under root A square plus B square unit. So this is the answer. Okay, students. So write these solutions, pause it and write. So now, students, we have taken third question, and this question, determine the following points 1, 5, 2, 3 and minus 2, minus 11 are collinear. Collinear means, students, these points are in a straight line. Collinear means points lie in a straight line. Okay, students. That is, suppose these points are there, if A, B, C, so these points are collinear. If we can draw a line through passing all the points through, then we can say that these points are collinear. But if points are like that, A, B, C, certainly all points are not in a straight line, and in this case triangle is formed. So in this case points are not collinear. So students, there are two methods to find points are collinear or not. In first case, we take point like A, this point like B, and this is C. So here first of all we will discuss AB, BC and CA. We will find the distance between these sides. In other words, we can say the length of these sides, and after finding AB, BC, CD, if the sum of two sides is greater than third side, then we can say that points are non-collinear, means triangle can be formed. So here there is a trick. First of all, we will find AB, then BC, then CA using distance formula. To start here, first of all, AB is equal to under root x1 minus x2, sorry, x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square. Put these values of for AB. AB के लिए आपका x1 y1 and this is x2 y2. x1 minus x2 1 minus 2 whole square, y1 minus y2 plus
5 minus 3 whole square. So it becomes minus 1 square plus 2 square. So that is 1 plus 4 root 5. Okay students, ये आपका आ गया root 5. Now BC. For BC same formula like x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square. And students for BC, अब now BC these will be x1 y1 and x2 y2. ओके, तो अब BC के लिए क्या करेंगे आप, x1 y1 and x2 y2. Now putting these values, x1 minus x2, x1 is 2, x2 minus 2, 2 minus 2 whole square plus y1 minus y2, 3 minus 11, 3 minus 11 whole square. Students, this can be written as 2 plus 2, 4 square 16 plus here 3 plus 11 14 square 196. So this can be written as 196 plus 16 212 I think. Okay students, so this is the BC. Similarly students, we will find CD. Now students, for CA. Now CA using same formula, x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square. Now students, for CD, these will be x1 y1 and these were x2 y2. So putting these values here, I think x1 is minus 2. This is minus 2 students. So x1 minus 2 minus 1 whole square plus y1 minus 11 minus y2 5 whole square. It can be written as minus 3 whole square plus minus 16 whole square. So finally you can get 9 plus 16 square 256, and adding these 256 plus 9 265. Okay students,